Good evening, everyone. How are you? Am I audible to all of you? Just clear me. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣା ଯାଉଛି? Am I audible to all of you? Clear me just. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିୟରଲି ମୁଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି and ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟି ପ୍ରପରଲି ଭିଜିବଲ ହେଉଛି? Just inform me. And କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? And 1 month ପରେ ଆମେ again ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ May 2023 ର ଡିସ୍କସନ କରିବା. Yes. Okay. तो समस्त मंथ्स कनेक्ट हो जातु देन वी विल स्टार्ट दृष्टिकोण मे 2023 दृष्टिकोण मे 2023 रे आपन को बहुत सारा तो इनफॉरमेशन आज मिलिबो बट ता छडा भी आपनकर आज आ गोटे नुवा सीरीज जेमति कि हमें कंटीन्यूअसली एई वर्ष ठार दृष्टिकोण मैगजीन हिसाब रे हमें स्टार्ट करथलु जे मेंस रिगार्डिंग बहुत सारा टॉपिक आपन क्लियर हबो बेसिकली फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर ता छड़ा ओडिशा पार्ट रो बहुत सारा इनफॉरमेशंस जोटा कि आपन को हेल्प करिवो मेंस एग्जामिनेशंस रे सेटा मध्ये हमें आज ठारू स्टार्ट करूछु जोटा कि होची आपन को ट्राइबल्स ओके ट्राइबल्स मानकर जहा किछि भी इनफॉरमेशंस आज हमें सेटा आपन को सहित शेयर करिबा खास करी मु आपन को सहित शेयर करिबी दृष्टिकोण रो जेहेतु ये स्पेशल एडिशंस आपन माने जानि छंती दृष्टिकोण मैगजीन रे जोटा कि फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपन को ray.academy साइट रे आपन को फ्रीली अवेलेबल होची ता छडा एथिरे एमती किछि इनफॉरमेशन रोची जोटा कि आपन माने मेंस आंसर राइटिंग रे मध्ये यूज करि परिबे एवं ता छडा आपनकर जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस रे जोटा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रे एमती कंटेंट रोची जोटा कि डायरेक्टली एग्जामिनेशंस रे आसीबार चांसेस रोची ओके सो क्विकली समस्त जॉइन करंतु देन वी विल स्टार्ट सो एथिरे ट्राइबल्स सीरीज आज आज स्टार्ट हबो ट्राइबल सीरीज रे आपण माने जानिछंती ओडिशा केते मात्रा रे स्टैंड करे बिकॉज़ ट्राइबल कम्युनिटी रे रीजनल डिस्पैरिटीज हो ट्राइबल कल्चरल डेवलपमेंट हो डांस हो ओके म्यूजिक्स हो स्क्रिप्ट्स हो सेतिरे ओडिशा रे बहुत सारा हमको विविध कल्चर हमको देखिया पई मिले ट्राइबल कल्चर रे एवं ता छडा इंडिया रो ट्राइबल पॉपुलेशंस रे ओडिशा रो मध्ये गोटे बहुत बड़ योगदान रही एंड खास करी आज हमें से ऊपर ही डिस्कस करिबा तो समस्त आपण माने कहंतु कि आपण माने केमिति अछंती एंड केते मात्रा रे वेट करथले दृष्टिकोण सीरीज को जो स्टूडेंट हम सहित जॉइन करि नाहंती ए पर्यंत बा से माने क्विकली जॉइन कर जिवे देन हमें धीरे धीरे स्टार्ट करिबा ई सेशन टिकू किंतु ता पूर्व आपण माने को फीडबैक मु निहात नेआ पई चाहिबी कि केते मात्रा रे आपण माने वेट करथले दृष्टिकोण सीरीज को बिकॉज़ आपण माने जानि छंती जो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एक्सक्लूसिवली ये ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे जो प्रिपेयर होची अपना माने कौन सी प्लेटफॉर्म रे दृष्टिकोण टाइप रो कौन सी भी मैगजीन आज पर्यंत अवेलेबल नथिला ओडिशा रे जोटा फर्स्ट टाइम पे आपण देखुचंती जोटा हमर एई वर्ष जो स्टार्ट हिची इनिशिएटिव बट ता पूर्वरु भी हमें ओडिशा करंट अफेयर पई डेडिकेटेड सीरीज सब आनितलु बट दृष्टिकोण एई वर्ष रो 2023 रु जनवरी रु स्टार्ट हिची ओके सो आई होप कि समस्ते भलर थिबे एंड वेट करथिबे नियाती भाबरे मैगजीन को कारण एथिरे बहुत ही एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव टॉक्स वीडियोस लेक्चर सब आपन पई अछि बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपन को प्रोवाइड करबी देन हमें एंड पार्ट रे गोटे एमिति ट्राइबल कल्चर बा ट्राइब्स ऊपर हमें डिस्कस करिबा जोटे डायरेक्टली आपन एग्जामिनेशंस रे आसीबार कैपेसिटी रखुची किंबा आपन जीएस पेपर रे जतले भी रीजनल डिस्पैरिटीज कथा लिखुचंती जतले ट्राइबल बेल्ट डेवलपमेंट कथा कहउचंती केबीके अंचल कथा कहउचंती बहुत टाइम रे आपण देखिथिबे कि रिसोर्सेस अभाव होउची आपण माने मेंस पूर्वरु केमति भाबरे प्रैक्टिस करिवे तार गोटे ऑथेंटिक डाटा नहीं आपण पाखरे ओके सेही पर्टिकुलर टॉपिक रिगार्डिंग हमें आज डिस्कस करिबा तो समस्ते यस समस्ते निहाती भाबरे एबे मो सहित कनेक्ट होंतु एंड ए वीडियो टी को आपण माने शेयर कर दियंतु निजरो ग्रुप्स माने करे बिकॉज़ एई जो वीडियोटा खाली एस्पिरेंट्स मानक नुहे ये समस्त ओडिशावासी मानक इंपोर्टेंट जो मैंने भी ओडिशा रोचंती ओडिशार आर्ट एंड कल्चर ओडिशार नीतिदिनिया खबर जोटा कि आमर लाइक एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो गुड़ा थाए यस स्लोली जीवा सो निहाती भाबरे
मु स्टार्ट करी दृष्टिकोण मे 2023 सीरीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आम टे नजर देवा फास्ट कौन रही टॉपिक रे। तो चलतु फास्ट आम देखा आज टॉपिक रो फास्ट स्टार्टिंग टॉपिक कौन रही आपण मैंने देखिथे स्टार्टिंग टॉपिक हिसाब से जस्ट मिनिट यस ओके देखो भल भाव में तो स्टार्ट आम करवा देखो पीएम मोदी टू फ्लैग ऑफ पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। एबे रिसेंटली आपण माने जानिछंती गोटे एते ह्यूज ए डेकेड्स रो हमें कहि परिबा कि ट्रेन एक्सीडेंट हेची बट समहाउ हमर मे मंथ रे आम पई इंपोर्टेंट कोन आपण रिसेंटली टीवी मीडियाज रे देखिथिबे मध्य एवं ता छडा आपणकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे स्टेटस रे बहुत जगह रे आपण देखिथिबे ई न्यूज़ टिकू पीएम मोदी फ्लैग ऑफ पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। ओके तो मु चाहिबी जेहेतु आज एनवायरनमेंट डे एंड मु चाहिबी निहाती भाबरे कि ये जो ट्रेन एक्सीडेंट एत बड़ होती तो आम समस्त तरफ जो मैंने भी परिवार एत सब क्षति घटी तो आम गभीर हृदय समस्त श्रद्धांजलि देवा एवं आशु आरोग्य कामना करवा जो मैंने भी एबे पर्यंत ट्रिटमेंट होती तो निहाती भाव में आपण मैंने निज तरफ जेते आप आस्पिरेंट होती एबे मैक्सिमम टाइम आपणकर डेडिकेशंस आपणकर पढ़ार इन्वेस्ट कर किसी समय बाहर करी प्रे करने दरकार जो मैंने कि यही जो दुर्घटना ग्रस्त अच्छा। ओके सो चलतु टॉपिक ऊपर को जीवा। सो पीएम मोदी टू फ्लैग ऑफ पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस एथिरे कौन अच्छी इंपोर्टेंट आम देखो इंपोर्टेंट कौन रही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आम जानिबा कि कहीं न्यूज रही। सो प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो फ्लैग ऑफ द पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस एंड मोर अबाउट इट जदि आम जानिबा कौन सब एथिरे इंपोर्टेंट अच्छी द ट्रेन विल पास थ्रू द खोर्धा कटक जाजपुर भद्रक बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा एंड पश्चिम मेदिनीपुर एंड पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल राइट पश्चिम मेदिनीपुर एंड पूर्व मेदिनीपुर in West Bengal. And PM will also dedicated the doubling the Sambalpur Titlagarh rail line, new broad gauge rail lines between Anugul, Sukinda, and Bichupalli, and Jarthava, besides Raulkela, Jharsuguda, and Manohapur and Pondamunda third lines. So basically हम पे important कौन the train will pass को जगह देखी पास करता जो अपन सोशल मीडिया रे देखुतले से टाइम पीरियड रे कि बहुत सारा स्टेटस अपलोड होउतला को एरिया देखी पास करता एग्जामिनेशन एटा आसीपारी को एरिया देखी पास करि नतला। सो खोर्धा कटक जाजपुर एंड भद्रक एंड बालेश्वर ओडिशा रु एमन को एरिया देखी पास करिछि एंड एई देखी पास करबे जो प्लान चलछि वंदे भारत एक्सप्रेस एंड पश्चिम मेदिनीपुर एंड पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल राइट। सो चलतु आउ किछि डिस्कस करबा ता ऊपर। सो वंदे भारत एक्सप्रेस जोटा हमर चालुछि वंदे भारत एक्सप्रेस रो इंपोर्टेंस कोन ये होछि इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड सेमी हाई स्पीड्स मन रखंतु ये हाई स्पीड्स नुहे ये होछि सेमी हाई स्पीड्स। ओके तो जो मैंने भी जानना से जानी रखु सेमी हाई स्पीड हम एग्जामिनेशन में प्राय तो यहाँ पचार जाए बहुत सारा एग्जामिनेशन ऑलरेडी आसी सारी जो वंदे भारत इनिशिएटिव स्टार्ट होता सो ये इंडिजेनियसली बा आमर भारत ही डेवलप ओके एंड सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल ट्रेन एंड फास्ट वंदे भारत वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई रे जोटा अछि एज पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम राइट part of Make in India program and this train dubbed at train 18 during the development phase ये केतले हितला 18 ट्रेन 18 ड्यूरिंग जेतले डेवलपमेंट फेज चलतला यार नाम कोन थला ट्रेन 18 मन रखिथिबे याकू ट्रेन 18 को आउतला जेतले भी या ऊपर काम चलतला एंड आफ्टर दैट वंदे भारत एक्सप्रेस को आगला जोटा कि इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड सेमी हाई स्पीड ट्रेन so it can achieve a maximum speed of 160 km due to faster accelerations and declarations reducing the journey time by 25% to 45%. So ये जितने इनिशियल पार्ट रे वंदे भारत एक्सप्रेस आस्तला आफ्टर दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0. So the Vande Bharat Express 2.0 offers a merit okay of superior and aircraft like traveling experience ये बहुत जोरे जीवो yes and it is equipped with the advanced state of the art safety features including an indigenously developed train collision avoidance system जोटा कि कवच and make sure aspirants जो मैंने भी देखुचंती वीडियो टू को आज वीडियो टू को एबे रिसेंटली कवच
एंड जो ट्रेन एक्सीडेंट पर कवच रो कथा बहुत बार उठीला आपण माने निहाती भाबरे कवच को कवर करिवे कवच केबे आस्तला कवच रो क्राइटेरिया कोन बेसिक फीचर्स कोन कवच तो दीटा ट्रेन मध्य जदि जदि सेम ट्रैक रे थांती एंड समहाउ से माने जदि कोलाइड करबा अवस्था रे थांती तो 400 मीटर दूरतारु आपण माने जेंति जानि छंती से स्टॉप ही जानती इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक द्वारा ओके तो तार रिगार्डिंग आपण माने अधिक पढ़िबे कवच रिगार्डिंग एंड इन न्यू डिजाइन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ए photo catalytic ultraviolet air purification system is installed in the roof mount package unit okay rmpu rmpu full form roof mounted package unit roof mounted package unit for air purification सो बेसिकली ये कौन होची हाई स्पीड ट्रेन तो हाई स्पीड ट्रेन आपण माने एक्सपेक्ट करि परिबेनी कि आपण डोर ओपन करके बसबे राइट तो सेतरे कौन होची ये क्लोज हे की थाए ए जो ट्रेन ता तो निहाती भाबरे एते जण पैसेंजर जो अछंती तो भितरे जो प्यूरिफाई इम्प्योर ही जो इम्प्यूरिटी बहुत सारा हबो ओके गैसेस बहुत सारा हबो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा उत्पन्न हबो सेति पई खास करी एयर प्यूरिफिकेशन पई रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट बाहर हेतला ओके cover system developed by RDSO in 2022 yes exactly एंड ए वीडियो को मैक्सिमम रो मैक्सिमम आपण माने शेयर करंतु आपण माने कोन से भी ग्रुप रे हो पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रुप रे हो खास करी हमकु ओडिसा रो न्यूज़ जानि रखबा निहाती भाबरे दरकार राइट एंड चलंतु देखिबा नेक्स्ट जो रही छि हमरो करंट अफेयर एमिनेंट फ्रीडम फाइटर निशाकर दास पासेस अवे इन ओडिसा कोरापुट ओके कोरापुट रो निशाकर दास एबे रिसेंटली पास्ट अवे हे गले बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सन एमिनेंट पर्सन बिकॉज तांकर जो न्यूज को सीएम नवीन पटनायक निजे ही ट्वीट करथिले ओके ट्विटर रे छाडिथिले तांको गभीर श्रद्धांजलि देथिले कोथि पई इंपोर्टेंट काहे कि न्यूज रे आसले भलवर देखंतु व्हाई इन न्यूज सो एमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड मेंबर ऑफ भूदान मूवमेंट मन रखु भूदान मूवमेंट ओडिशा रे भी चलीथिला ओके भूदान मूवमेंट ग्रामदान मूवमेंट ये सब विषय में डिटेल डिस्कस करबा एगुडा सब नवकृष्ण चौधरी को टाइम रे ओडिशा रे मध्ये चलथिला एवं जानिबा आउ किछि डिटेल्स रे सो ये कोन हेले ये कोरापुट रु बिलोंग करंती एंड दास जॉइन द फ्रीडम मूवमेंट व्हेन ही वाज 15 इयर्स ओल्ड यस जेतले 15 वर्ष बयस रे हमें नॉर्मली 9th या 10th रे तो 8th या 9th क्लास रे हमें जो थाउ ओके सेतेबेले हमर चिंताधारा अलगा किछि थाए लाइक आपनकर एग्जामिनेशन केमती भाबरे भलो मार्क रखिबे मैक्सिमम परसेंटेज रखिबे किंतु सेही टाइम पीरियड रे सेही सेशन आपण माने कहि परिबेनी कि सेही टाइम रे स्कूल नथला तले भलो भलो स्कूल मध्ये थिला ओके तो सेही टाइम पीरियड रे से कोन करथले ते कम बयस रु से जॉइन करथले फ्रीडम मूवमेंट रे यस एंड ही वाज द मेंबर ऑफ बानर सेना ड्यूरिंग महात्मा गांधी आपण माने जानि रखे दरकार बानर सेना हमर गोटे थिला एवं बहुत सारा फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग द फीमेल पर्सन आल्सो फीमेल फ्रीडम फाइटर्स मानक कथा बारंबार एग्जामिनेशन से आपण माने देखिथिबे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रे मध्ये देखिथिबे कि एमिनेंट पर्सन्स फ्रीडम फाइटर्स मेल रु फीमेल पर्सन्स रु बहुत जण कर नाम एग्जामिनेशन रे डायरेक्टली आसे आपण एक्सपेक्ट भी करि परबे जेतले एबे जीएस पर्सन एते सारा डिवाइड हेछि एथरे ओडिसा क्वेश्चन निहाती आसीबो एंड पुणी थरे फॉर्मेट बैक करिवो आपनकर आर्ट एंड कल्चर एंड फ्रीडम फाइटर्स को ऊपर क्वेश्चन निहाती भाबरे आसीबो तो सेथिरे आपण माने निहाती पढिते बानर सेना कथा हमरो ओडिसा फ्रीडम स्ट्रगल ले ओके सो एथिरे से जॉइन करतले ही वाज मेंबर ऑफ बानर सेना ड्यूरिंग महात्मा गांधी पीरियड ओके महात्मा गांधी को टाइम पीरियड रे सी बानर सेना रे जॉइन करतले एंड टू विजिट फ्रॉम May 5 to May 21 1934 1934 रे जते आस्ते महात्मा गांधी मे 5 रु मे 21 पर्यंत से बानर सेना रे से जॉइन करतले राइट एंड ही वाज जेल्ड सेवरल टाइम से जेल मध्ये दंड भोग करतले ओके एंड लेटर द वेटरन फ्रीडम फाइटर्स joined the Bhudan movement and he also worked for स्वदेशी जागरण एंड ग्राम्य स्वराज यस स्वदेशी जागरण एंड ग्राम्य स्वराज एवं ता छडा हमें जानिबा भूदान मूवमेंट कोन रही सो भूदान मूवमेंट टिके बैकग्राउंड में डिस्कस करबा इट वाज ए सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्टेड बाय विनोबा भावे के स्टार्ट करथले विनोबा भावे इन 1951 राइट 1951 ने विनोबा भावे स्टार्ट करथले एंड विनोबा भावे वाज ए डिसिपल ऑफ शिष्य थिले कहार महात्मा गांधी कर हु चूज हिम एज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही एग्जाम रे बारंबार आसे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही किए थिले आपनकर आंसर रहबा दरकार विनोबा भावे एंड हैड एक्टिवली प्रैक्टिस्ड इन इंडिया's freedom struggle
After independence, he realized that the issue of landless was a major problem faced by rural India. जो जमीहीन बा जो भूहीन जो आम कही था तो से मैक्सिमम प्रॉब्लम फेस करते पाखे निजर जमी नथिला तो से विनय भाव फास्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही हिसाब से लड़ाई स्थान जो स्टार्ट करते एंड इन 1951 ही स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट और द लैंड गिफ्ट मूवमेंट ऑब्जेक्टिव कौन थिला इट एम टू pursued wealthy landowners to denote a portion of their land to landless peasants. Basically aware करा जाउतला तांकू मोटिवेट करा जाउतला तांकू इन्फॉर्म करा जाउतला कि आपण माने को पाखरे जदी आवश्यकता रु अधिक लैंड अछि तो आपण माने कोन करि परबे एक्सेस लैंड को दान करि परबे लैंडलेस पर्सन्स को राइट. सो द मोमेंट गेन्ड मोमेंटम व्हेन भावे वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज से पदयात्रा करते से टाइम रे आपनकर आजिका टाइम भलिया नथिला जोग से पदयात्रा करते and requesting landowners to denote their land. And Bhave's approach was rooted in the philosophy of non-violence. से कौन सी तापाई आजिकल का न्यूज रे आपण माने देखुतबे कि जो टाइम रे बहुत सारा वायलेंस क्रिएट करा जेतले आपण जमी अधिग्रहण करंती किंतु भावेंकर एमिति अप्रोच थिला फिलोसॉफिकल अप्रोच थिला एंड नॉन वायलेंस नीति थिला जेतु से गांधींकर शिष्य थिले तो सेथिरे स्वतःप्रभुत्व भाबरे सेल्फ वे रे ही जो मान पाखरे लैंड ओनर माने थिले से माने किछि किछि लैंड डोनेट करूथिले दान करथिले एंड दैट लैंड ओनर शुड डोनेट देयर लैंड आउट of compensation compassion and empathy for the poor. तांकर जो गभीर आत्मीय थिला जो गरीब श्रेणी माने थिले तांकू से माने स्वतः प्रभुत्व भाव सेल्फ बाय सेल्फ से माने प्रोवाइड करथिले लैंड राइट. सो देन आसिला ग्रामदान मूवमेंट द नेक्स्ट very good evening. The next phase of Bhudan movement was the Gramdan movement. Okay, Gramdan tapare asla. After Bhudan, Gramdan asla movement or the village gift movement, right? So it aimed to create self-sufficient villagers by bringing about collective ownership of land. Self-sufficient तांकू करा जाउतला and the Gramdan movement urged villagers to donate their land to a village council. जो village council थिला सेतरे किछि किछि जमी दान करिया पई कुहा जाउतला and which would then manage and distribute the land to the villagers. ग्राम रे लोकन को जागा डिस्ट्रीब्यूट करा होतला and this movement gained support by many political leaders and was seen as a solution to the problem of unequal distribution of land in rural India. What are the significance of that movement? The significance are like the movement was successful in many part of India with thousands of acres of land being donated by landowners. Okay, बहुत सारा जगह स्थल को सही टाइम रे गरीब श्रेणी को बा विलेज जो काउंसिल अछि ताकू प्रोवाइड करायतला ताकर डेवलपमेंट पई एंड भूदान ग्रामदान मूवमेंट had a significant impact on Indian society and politics. It helped in reducing the landlessness and bringing about a more equitable distributions of land and empowerment of rural communities along with the promoting self-sufficiency. Right? It paved the way for the protection of natural resources by giving everyone in community equal rights for responsibilities towards them and empowering community to the own towards self governance. Okay, तो बेसिकली यार मोटो थिला कि जो मानक पाखरे जमी नथला भूदान मूवमेंट रे तांकू विनय भावे तो प्रयास थिला किंतु ग्रामदान मूवमेंट आसु आसु से लोक माने सेल्फ अवेयर हेले एबे स्वतः प्रभुत्व भाव रे से माने किछि किछि जमी प्रोवाइड करले जो विलेज काउंसिल अछि. सो सेतिरे कोन होतला बेसिकली सेल्फ सफिशिएंसी ऊपर बेसी फोकस करा होतला. ओके, then come to next current affair and that is Paralakhemmundi railway station intact status. देखिबा एथिरे डिटेल किछि देखंतु एठी पिक्चर आपण माने देखि परते पारलाखेमुंडी हेरिटेज साइट हिसाब रे हमर ओडिसा रे परिगणित हुए एवं रिसेंटली ये जो पारलाखेमुंडी रे को हिल अछि आपण माने मते इन्फॉर्म करंतु जोटा कि रिसेंटली यस रिसेंटली एबे हेरिटेज रो मान्यता पाइछि वर्ल्ड हेरिटेज रो को हिल अछि निहाती भाबरे मते इन्फॉर्म करबे कमेंट सेक्शन में राइट. चलंतु देखिबा व्हाई न्यूज़ काहे कि ये न्यूज़ रे थिला तो पारलाखेमुंडी रेलवे स्टेशन इन ओडिशा विल बी द फर्स्ट to get heritage status by intact.
एंड इंटैक रो हेडक्वार्टर कोठी अछि न्यू दिल्ली रे अछि ये गोटे एनजीओ राइट सो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा ये कौन हेची ना ये ही जीवो ओडिशा रो फर्स्ट हेरिटेज स्टेटस पाइतबा रेलवे स्टेशन जे कि होची पारालाखेमुंडी बहुत ही ओल्ड एंड इट वाज बिल्ट इन ये केतले हेतला 1899 1899 रे हेतला एग्जैक्टली एंड द स्टेशन वाज मेड बाय गौर चंद्र गजपति नारायण टू ओके गजपति नारायण देव टू को द्वारा गौरचंद्र गजपति नारायण टू को द्वारा द्वितीय बा आमे कहि परिबा गौरचंद्र गजपति नारायण द्वितीय एवं नारायण देव एवं तांको सहित के कोलाबोरेट करथिले बा तांकू हेल्प के करथिले महाराजा श्रीराम चंद्र भंजदेव जे कि होउचंती मयूरभंज रो राजा ओके एंड ये होउचंती गजपति रो राजा सो गजपति एंड मयूरभंज एग्जैक्टली गंधमार्दन ओके सो मयूरभंज एंड गजपति रो राजा से कौन करते 1899 रे ए जो रेलवे स्टेशन टी मिलित भाव स्थापन करते एंड एंड ये कोठी पे अच्छी नियर टू महेंद्रगिरी हिल्स पाखरे अच्छी ओके महेंद्रगिरी मान्यता पाइतला महेंद्रगिरी ओके महेंद्रगिरी भी हेरिटेज मान्यता पाइतला एंड देखिबा तापर नेक्स्ट कोन रहिछि हम पे इंपोर्टेंट देखंतु ओडिशा रैंक्ड एट सेकंड इन नेशनल वाटर अवार्ड 2022 ओके ओडिशा द्वितीयतम रैंक पाइला कोठी ना नेशनल वाटर अवार्ड 2022 रे राइट स्लाइड ठीक से शो होनी स्लाइड आपण मानकु क्लियरली स्लाइड शो होची एवरीवन स्लाइड ठीक से शो होची समस्त को नॉर्मल प्रेजेंटेशन ये होनी ओके वर्ड फाइल द्वारा होची तो मे बी आपन को ए टाइप रो विजुअल देखा जाउथबो स्लाइड समस्त को देखा जाउची समस्त को मते जस्ट कंफर्म करे दियंतु एंड मेक श्योर जो माने भी प्रेजेंट अछंती निहाती निजरो फीडबैक देबे निहाती निजरो जहां भी मु पचारछु आपण माने शेयर करंतु ओके एवं ता छडा जो माने भी प्रेजेंट अछंती याकू मैक्सिमम शेयर करंतु वीडियो टिकु एवं लाइक मध्य करंतु यस क्लियर ओके चलंतु हमें कंटिन्यू करबा तो ये स्टार्टिंग मात्र ओडिशा रैंक द्वितीय स्थान अधिकार करछि नेशनल वाटर अवार्ड रे ओके टिके राइट को आनिबी जस्ट जदी राइट को आनिबी ताले मो पिक्चर ऊपर से हे जो तो बैक साइड रे से हाइड हे जो ओके जदी मु टिके राइट को आनुची ओके आपन को क्लियरली विजिबल हो जस्ट टिके देखंतु क्लियरली विजिबल हो मु जतरा स्लाइड करी ऑटोमेटिकली विजिबल हो सुधीरंजन ओके सो व्हाई न्यूज ये अछि ओडिशा हैज बीन रैंक्ड सेकंड इन बेस्ट स्टेट कैटेगरी जो बेस्ट स्टेट कैटेगरी इतला एंड ए जो अवार्ड ता का द्वारा दिया इतला को मिनिस्ट्री द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नाउ क्लियर एवरीवन सुधीरंजन जो कहतले एबे क्लियर ओके so Odisha has been ranked second in best state category of the National Water Award 2022 by the Ministry of Jal Shakti द्वारा हितला and for its work in the field of water okay just a minute I'm reducing it I think ebe apan ko clearly visible habo yes just inform me okay so देखंतु तापरे in the field of water resources conservation and management during 2020 and 21 and 2021 and 22 so एथिरे दीटा कैटेगरी इतला बहुत सारा कैटेगरी इतला बट मु एठी इंपोर्टेंट दीटा कैटेगरी रखी छी सो बेस्ट स्टेट आपण माने देखंतु जल शक्ति नमामि गंगे प्रोजेक्ट ओके सेबे नहीं एछंती जो नमामि गंगे रो प्रोजेक्ट जो सेपरेटली होतला एबे से जल शक्ति मिनिस्ट्री अंडर अछि तो ता ऊपर आउ किछि डिस्कस मध्ये करिवा परे एबे तो नुहे बिकॉज़ से पुनी डिरेल हे जाय पारे ओके सो मध्य प्रदेश ये हाईएस्ट नंबर अछि आफ्टर दैट सेकंड रे अछि ओडिशा थर्ड रे अछि आंध्र प्रदेश एंड बिहार एंड बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रे किए पाइ छी गंजाम ऑफ ओडिशा एग्जामिनेशन रे निहाती भाव रे आसीबो ओके ताकू नोट डाउन करनेबे एंड यस आपण मानकू ए जो मैगजीन अछि फ्रीली अवेलेबल हे जो काली किबा पर दिन भीतर आपन को साइट रे अवेलेबल हे तो आपण माने जमा भी वरीड होंतु नाही कि कोठू कलेक्ट करिवे केनते डाउनलोड करिवे www. yes मु लिखि दोछि आउतर www.ray.academy ओके एकेडमी रे आपण एंटर करले
ओडिशा करंट अफेयर सेक्शन को गले आपण मानकू यार अवेलेबल हे जिवो मैगजीन विथ इंक्लूडिंग कोन रहइबो आपनकर एमसीक्यू रहइबो एथिरे आस्तबा जते सब टॉपिक रो एमसीक्यू मध्ये सेतरे इंक्लूड हेकी रहइबो ओके निहाती भाबरे विजिट करके से डाउनलोड करनेबे जो माने प्रीवियस मंथ रो डाउनलोड करनांती फ्रीली अवेलेबल अछि आपण माने देखि नेबे डाउनलोड करनेबे ओके चलंतु बढ़िबा आगो को सो ओडिशा कैबिनेट रिसफल सीएस आपण माने सुनिथिबे बे रिसेंटली ओडिशा कैबिनेट रिसफल हेची माने आउ थरे चेंज करा हेची मिनिस्ट्री ओके तो देखंतु किए को मिनिस्ट्री अछि व्हाई न्यूज सो 3 न्यू मिनिस्टर have been inducted into Chief Minister Navin Patnaik's cabinet, right? Chief Minister Navin Patnaik's cabinet. So Governor Ganeshi Lal, तांकर oath taking किए करथिले Governor करथिले, right? Governor Ganeshi Lal administered the oath of the office to the 3 earlier. किए थिले just a minute हमें देखिबा तो senior BJD leader Biju Janata Dal leader, okay, and former speaker Bikram Kesari Aruk, okay, will be the new finance minister. Yes, sir, Ganjam Sobutri agare like child marriage and Manrega exactly Ganjam ebe progress करछि ताकू नोट डाउन निहाती भाबरे रखिबे सो ये जाय कि आगु जाय कि आपन को निहाती भाबरे एग्जाम रे हेल्प करिवो कंटेंट राइटिंग रे आपन को हेल्प करिवो मेंस रे आंसर राइटिंग पई आपन को हेल्प करिवो डायनामिक पोर्शंस रे आपण माने केस स्टडी भी तार देई परिबे जदि प्रीवियस टिके सर्च करिवे बहुत सारा टेक्निक्स अछि मेंस रे एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन केमिति केस स्टडीज लेखिबे एवं मैक्सिमम रु मैक्सिमम मार्क आपण गेन करि परिबे जीएस पोर्शन में हमें ता नै कि मध्ये आउ किछि डिस्कस मध्ये करिबा तो चालंतु एबे फोकस करंतु करंट अफेयर उपरे कि एबेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री पदवी काहाकू दिया गला विक्रम केसरी आरुक जे कि फॉर्मर स्पीकर मध्ये रहिसथि ओके सो विल बी द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर एंड सुधा मांडी has been entrusted with the school and mass education समीर दास थिले तांको बदले सुधा मांडी एबे हिचंती former minister Sadha Naik has been given the labor portfolio labor ministers ministry of labor तो शारदा नायक हेचंती तो देखिबा आगरु जो थिले पूर्वरु earlier the finance minister portfolio was with निरंजन पुजारी ये मध्ये फॉर्मर स्पीकर थिले निरंजन पुजारी एंड ता सहित along with that तांको को पदवी मिलितिला ना हेल्थ मिनिस्ट्री भी पदवी मिलितिला नवदास पर मृत्यु घटिला तापरे तांको से पदवी मिलितिला बट एबे सोली तांकर फोकस रहिबो हेल्थ एंड पार्लियामेंटरी अफेयर्स रे एवं तांको हातरे जोडा थिला फाइनेंस मिनिस्ट्री एबे चल जेछि विक्रम केसरी आरुक को पाखकु राइट निहाती भाबरे ये एग्जामिनेशन से रिसफल केस मैक्सिमम टाइम आपण देखिबे कि हेल्थ एजुकेशंस एंड जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का अंडर रे अछि बिकॉज़ रिसेंटली ये रिसफल हेछि एग्जामिनेशन ने आसीबार चांसेस होछि बिकॉज़ अपन सिलेबस रे ऑलरेडी मेंशन अछि ओडिसा कथा सो ओडिया माउंटेनियर सिद्धार्थ राउत रॉय atop Mount Elbrus, right? कहीं की इम्पोर्टेंट देखंतु दीटा कारण पे इम्पोर्टेंट गोटे जदि हमें जानिबा कि सी होचंती कहांकर पुत्र सुर राउतराय सुरंजन राउतराय कर पुओ सी ओके एवं ता छडा मध्य सी जणे पर्वतारोही बा माउंटेनियर सो ओडिया माउंटेनियर सिद्धार्थ राउतराय atop Mount Elbrus कोठी अछि माउंट एल्ब्रस सो नोटेड ओडिया माउंटेनियर सिद्धार्थ राउतराय scaled Mount Elbrus, the highest and most prominent peak in Europe. Odiochi Europe reochi and Siddharth summited the 5,642 meter high, जोटा कि almost 18,510 फुट होची माउंटेन पीक रे से पीक रे पहुंचतिले ओके नोटेड ओडिया माउंटेनियर सिद्धार्थ राउतराय scaled Mount Elbrus, the highest and most prominent peak in Europe, and after that से बहुत सारा पूर्वरु मध्य माउंटेन्स मध्य चढ़ी साथिले राइट सो नॉर्थ अमेरिका रे मध्य से जाइछंती एम बहुत सारा अफ्रीका रीजन्स रे मध्य से पीक छुइछंती तो देखिबा नेक्स्ट कोन रहिछि हम पे टॉपिक सो एंशिएंट फोर्ट्स रिमेन फाउंड इन ओडिसास केंद्रापड़ा आपण माने जानिथिबे निहाती भाबरे हमर कल्चर हमर हेरिटेज बहुत ही पुराना ओडिसा रो कल्चर हेरिटेज जो अशोकांको टाइम पीरियड रु मध्य मौर्यन डायनास्टी पीरियड रु मध्य एवं था पूर्व रु मध्य मौर्यन डायनास्टी हो किबा अशोकांको टाइम पीरियड रे काहे कि ओडिसा इंपोर्टेंस थिला बिकॉज ऑफ दिस हम पाखरे पोर्ट थिला सी रूट थिला हमर एठू सी रूट बाली यात्रा जो हुए आपण माने जानिछथि साधव पो माने जानती बाली सुभात्रा बोर्नियो एठाकू ट्रेड करिया पई
राइट सो से टाइम रे बहुत सारा पोर्ट हमरो ओडिशा साइड रे थिला एवं एबे जनाशुना किछि मात्र अछि एंड बाकी सबू एबे मध्य बाहर होई नाही बा एक्सकावेटेड हेई नाही सो सेही भितरु एथरो गोटे रिसेंटली एक्सकावेट हेइछि सो एंशिएंट पोर्ट रिमेन फाउंड इन ओडिशा केंद्रापड़ा रिसेंटली केंद्रापड़ा रे मिलिछि ओके सो द रिमेन व्हाई इन न्यूज़ काहे कि न्यूज़ रे द रिमेन्स of an ancient port were discovered near the चित्रोत्पला river चित्रोत्पला रिवर आपनकर जदि मने थियो मो क्लास रे आपनको पढितली चित्रोत्पला रिवर ये कहार पार्ट हु कैन से आपन माने मते कमेंट सेक्शन में मध्ये मेंशन करि परिबे ओके चित्रोत्पला रिवर को रिवर पार्ट चित्रोत्पला ओके पूर्वरु नाम मध्ये तार थिला तार एंशिएंट नेम मध्ये मु क्लास रे डिस्कस करैतली चित्रोत्पला रिवर रो निहाती भाबरे मते कमेंट सेक्शन में मेंशन करबे चलନ୍ତୁ देखिबा आउ किछि या विषय डिटेल सो द पोर्ट इज बिलीव्ड टू बी 1200 years old yes महानदी very good so the port is believed to be 1200 years old 1200 वर्ष पूर्वरु ये प्रेजेंट थिला एंड कोन थिला एठी वुडन एंकर पिलर एंड लॉन्ग व्हाइल डिगिंग द पॉन्ड एटी बेसिकली गोटे पोखरी खनन टाइम रे जो मंदिर थिला महादेवंकर मंदिर से टाइम रे जो पोखरी खनन होतला सेही टाइम रे एमने पाइछंती ओके 1200 इयर्स ओल्ड गोटे पोर्ट रो संधान पाइछंती जोतरे की वुडन एंकर थिला एंड एंकर बेसिकली जो जहाज मानकू बा डंगा मानकू अटकेबारे चेन द्वारा बांधिबारे सहाय्य करे ताको एंकर कुहा जाय राइट एग्जैक्टली अनिता जसना पुष्पांजलि ठीक अछि महानदी and how can using yes very good Anil using the pickaxe small crowbars iron rods the workers are scoping the layers of the soil okay the जो स्मॉल ताकर इक्विपमेंट अछि ता द्वारा से माने खनन करथिले तो एई एक्सकावेट जो करथिले लोकल लेबर्स माने ही करथिले ओके सेही देहरु से माने पाइछंती एंड आफ्टर दैट से माने एएसआई को मते इन्फॉर्म करथिले yes near to my native तो आपण निहाती भाबरे एवर थिबे अनिता very good so secretary of Odisha Institute of Maritime and Southeast Asian Studies OIMSEAS okay secretary of Odisha Institute of Maritime and Southeast Asian Studies Dr. Sunil जे सुनील पटनायक जे अछंती से कहले से याकू क्लारिफाई करले कि ये होची 1200 वर्ष पूर्वर गोटे पोर्ट ओके ता छड़ा ए पोर्ट कोल्ड चेरीतोला पोर्ट भल भाव मन को ए पोर्ट कोल्ड चेरीतोला पोर्ट वाज सिचुएटेड नियर द चित्रोत्पला रिवर साइड रे गोटे पोर्ट नाम थिला पूर्वर 1200 वर्ष पूर्वर से पोर्ट नाम कोन थिला चेरीतोला पोर्ट एंड वाज फेमस फॉर मैरीटाइम ट्रेड वुडन एंकर yes effective से टाइम रे एते सारा यूज हो नथला बिकॉज वुडन एंकर रे नॉर्मली स्मॉल बोट गुडा को ही एंकर करा होतला ओके तो सेटा एते बड़ कथा भी नुहे एते आश्चर्यजनक कथा भी नुहे सो द पोर्ट्स इन चित्रोत्पला बालेश्वर चांदबाली देन चौना ओके चूड़ामणि धामरा एंड फॉल्स पॉइंट रे के पड़िछि महानदी पड़िछि एंड हैड ट्रेड कांटेक्ट विथ द इंग्लिशमैन बेसिकली जो माने ब्रिटिशर्स माने थिले से माने याकू मैक्सिमम रु मैक्सिमम यूज करथिले एंड धामरा सिचुएटेड अराउंड 60 किलोमीटर फ्रॉम द बड़ो बेतारा वाज डिक्लेयर्ड एज द पोर्ट इन 1858 1858 रे धामरा रो बड़ो बेतरा पाखरे जो 16 किलोमीटर दूर थिला धामरा ताकू पोर्ट हिसाब रे डिक्लेयर करायतला इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द एस्टुरी ऑफ बैतरणी एंड ब्राह्मणी जो माने ओडिशा रिवर सिस्टम मोर कवर करथिबे जो क्लास रे मु कवर करथि निहाती भाबरे जानि परथुबे बे को जागा रे एग्जैक्टली मिलिछि सो चांदवाली पोर्ट ऑन बैंक ऑफ बैतरणी रिवर इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड चांदवाली पोर्ट केबे इतला 1872 एंड थ्रू आउट द 19th century salt was export from चांदवाली कोन एक्सपोर्ट होतला salt एक्सपोर्ट होतला almost 60% of the total trade and commerce between Odisha and Calcutta was carried out from चांदवाली से कोडी को जाउतला ओडिसा टू कोलकाता जाउतला ओके कलकत्ता जाउतला चांदवाली थारु ओके देखिबा तापरे नेक्स्ट करंट अफेयर कोन रहिछि 3 एमिनेंट ओडिया राइटर गेट अति बड़ी जगन्नाथ दास अवार्ड 3 एमिनेंट ओडिया राइटर जोटा होछि अति बड़ी जगन्नाथ दास हमर सबुठारु बड़ अवार्ड लिटरेचर क्षेत्र रे देखिबा चलंतु के पाइछंती यू कैन सी द पिक्चर्स ओके
तो भल भाव देखु व्हाई न्यूज द प्रेस्टिजियस अति बड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड of Odisha Sahitya Academy will be presented to three eminent Odia writers for their outstanding contributions, while renowned writer Pratibha Rai will be conferred with the award of 2021. 2021 ପାଇଁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ରାୟ एग्जाम रे निहाती भाव में आसो आपण मैंने भावुवे कि 2021 जो पचारि तो ये निहाती भाव में बहुत पुराना कथा पचार ना रिसेंटली 2021 दिखाई ओके बेले बेले सफल भी कर दे पारे कि 2022 किए पाई 2023 किए पाई एमती सफल कर दे पारे एग्जामिनेशन रे निहाती भाव में ये इम्पोर्टाट ओके जेहेतु ये आमर हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ओके साहित्य एकाडेमी रो ओडिशा साहित्य एकाडेमी रो एंड डिस्टिंग्विश्ड राइटर Srikant Mahapatra, Satikant Mahapatra will receive the Puraskar for 2022. 2022 ପାଇଁ सतीकांत महापात्र को मिली 2021 ପାଇଁ प्रतिभा राय को मिली एवं देखिबा सिमिलरली एमिनेंट राइटर श्रीनिवास उद्गत को कौन मिली 2023 ପାଇଁ यस 2023 ପାଇଁ बा रिसेंट ईयर ପାଇଁ ताको मिली फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ओडिया लिटरेचर. Each of the recipient will be presented by 5 lakhs, a soul, a citations and memento. Okay, memento तांको provide करायची. Okay, yes. So अति बड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार is awarded by Odisha Sahitya Academy to Odia language literatures for their lifetime contribution to Odia literature. जो माने भी ओडिया लिटरेचर रे तांकर कंट्रीब्यूशंस रही योगदान रही ओडिशार सबुठारु टॉप साहित्य एकाडेमी अवार्ड जो किए अति बड़ी जगन्नाथ दास नाम रे जो नामित पुरस्कार अति बड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार क्या द्वारा दिया हुए ना ओडिशा साहित्य एकाडेमी तरफ दिया जाए प्रोमिनेंट लिटरेचर मान को दिया जाए. ओके दिस इज द मोस्ट रेस्पेक्टेबल ऑनर टू एनी लिटरेचर बाय द ऑर्गेनाइजेशंस. ये स्टार्ट के 1993 रे स्टार्ट होता मन रखिए निहाती भाव नोट डाउन करेंगे 1993 रे ये स्टार्ट होता. द फर्स्ट अवार्ड वाज गिवन टू द ओडिया पोएट राधा मोहन गणनायक. मन रखु एग्जामिनेशन ये टाइप क्वेश्चन ए आसूची कि जो अति बड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार दिया जाइथिला बा एइथरे आपको रिसेंट क्वेश्चन तो आसीबो ही आसीबो किंतु एई जो क्वेश्चंस रे आ गोटे क्वेश्चन भी स्टेटमेंट रे इंक्लूड हेई पारे कि यार फर्स्ट अवार्ड किए थे फर्स्ट अवार्ड किए पाइले तो सी होचंती राधा मोहन पटनायक एवं सेई लिस्ट रे 2001 रे जणे पुरस्कृत हेइतले सी होचंती सेई लिस्ट रो फर्स्ट महिला बसंत कुमारी पटनायक सी होचंती फर्स्ट फीमेल टू रिसीव दिस अवार्ड. ओके मन रखिथिबे फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अवार्डी राइट. सो चलतु डिस्कस करबा आउ किछि तो देखंतु ये बहुत ही इंपोर्टेंट रिसेंटली एबे चर्चा रे बहुत सारा थिला पार्लियामेंट हाउस हमरो. ओके पार्लियामेंट हाउस. सो कोणार्क चक्र एट कर्मा गेट स्लाइस ऑफ ओडिशा एंड इट्स इथोस एट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रिगार्डिंग आपण बहुत सारा न्यूज रे सुनथिबे बहुत सारा केओस थिला पार्टी मध्य रे मतभेद थिला तो सही रिगार्डिंग न्यूज रे बहुत टाइम ये चर्चा रहितला. ताप छोड़ा भी आमर ओडिशा पई ये काहे की इंपोर्टेंट बिकॉज पार्लियामेंट बिल्डिंग रे आमर कोणार्क चक्र रो जो प्रतिमूर्ति रही ओके तार जो आमे कहि परिबा कि रेप्लिका ताकू प्लेस कराइछि बा प्लेस मिलिछि ताकू सेठी व्हाई न्यूज. सो रेप्लिका ऑफ कोणार्क चक्र one of the 24th great stone wheel of sun chariot sun temple in Odisha is installed at Karma Gate, okay, of new parliament building, which was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on Sunday, right? जो ये Sunday गला अपन मैंने देखी थी जब पूर्व रे. So the more about it जदि हमें देखिबा the new building has 3 main gate, तीनटा मुख्य गेट एटी अछि ट्रायंगुलर शेप रे अपन मैंने देखी थी ये टाइप रो शेप रे अछि. ओके न्यू पार्लियामेंट हमरो जोटा पूर्व सर्कुलर शेप रे थिला एवं एथिरे यार लायन रो प्रतिमूर्ति आपण माने देखिथिबे तार माने गंबुजटा जो थिला ओके टॉमटा थिला से मिडिल पार्ट रे थिला. ओके सो याकू बेसिकली ब्रिटिशर्स माने करथिले याकू इंडियन आर्किटेक्चर माने करछंती. तो न्यू बिल्डिंग हैज 3 गेट्स, तीनटा गेट अछि मुख्यतः. सो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एंड कर्म द्वार. मन रखिथिबे ये सब बेले निहाती भाबरे इंपोर्टेंट एथर एग्जामिनेशन में आसीबो ही आसीबो
एंड ए जो तीन द्वार अच्छी गेट अच्छी ज्ञान द्वार शक्ति द्वार एंड कर्मा द्वार खास करी कर्मा द्वार हम इंपोर्टेंट ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बिकॉज इट इज कोणार्क सन टेम्पल जो चक्र अच्छी जो चक अच्छी ओके तार रेप्लिका प्रेजेंट अच्छी द ह्यूज ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ व्हील at world famous Konark Sun Temple's wheels with all intricate details in its is installed at the right side of the ceremonial gate right side को रखा है so again जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कौन दर्शाई he further said that the Garuda eagle गज elephant अश्व horse and मगर crocodile यांकर स्थान मध्य पार्लियामेंट हाउस रे अच्छी आपण माने देखि परिबे ए सबु एनिमल्स को स्थान दिया जाइछि एवं को एंड तार इंपोर्टेंस कोन मेड आउट ऑफ द सैंडस्टोन ये कोथरे दिया आइछि सैंडस्टोन ने तयारी आइछि मन रखितबे एग्जामिनेशन में निहाती आसीबो हैव आल्सो बीन इंस्टॉल्ड एट द entrance to the new building and it has been written there that the installation of elephant horse has been inspired from Odisha ओडिशा रू प्रेरित है कि इंस्पिरेशन ने कि हॉर्स एवं एलिफेंट्स को स्थान दिया एग्जैक्टली सो दीज एडॉन एंड एंट्रेंस ऑफ द सन टेम्पल एंड जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी सो जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी एवं सन टेम्पल ठारू इंस्पायर है कि हमर जो पार्लियामेंट हाउस रे गज बा एलिफेंट एवं अश्व बा घोड़ा को स्थान दिया ओके तो इंस्पिरेशंस कोठू मिली ओडिशा रू मिली राइट देखिबा आउ किछि डिटेल ले सो इट डिस्प्लेस द रेप्लिका ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम ईच स्टेट प्रतिटा स्टेट रो किछि किछि वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो किछि किछि रेप्लिका एठी देखिया पई मिलिबो एंड कैप्चरिंग देयर आइकॉनिक फेस्टिवल्स थ्रू पेंटिंग ओडिसा रो आसाम रो एमति ने कि वेस्ट बंगाल जहां भी किछि स्टेट मानकर आइकॉनिक फेस्टिवल जो रही आमर ओडिशा रो को टाइप रो फेस्टिवल आसीबो रथ यात्रा मस्ट आसीबो सो आइकॉनिक फेस्टिवल्स रो पेंटिंग्स पिक्चर्स हमको सेठी देखिया पय मिलबो सो फ्रेस्कोस और डिजिटल एडाप्शंस द पब्लिक एंट्रेंस लीड टू द थ्री गैलरीज को गैलरी संगीत गैलरीज देन स्थापत्य गैलरीज एंड पीपल्स वॉल संगीत गैलरी स्थापत्य गैलरी एंड पीपल्स वॉल एमिनेंट म्यूजिशियन इंक्लूडिंग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पंडित रविशंकर उस्ताद अमजद अली खान पंडित हरिप्रसाद चौरसिया विद्वान एन रमणी एंड पंडित शिव कुमार शर्मा और देयर फैमिली मेंबर हैव गिफ्टेड देयर इंस्ट्रूमेंट संगीत गैलरी को एमने इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट करचंती बा ताकर फैमिली रु गिफ्ट करायची जो माने कि जो गुडा को सभा पाइपो पार्लियामेंट हाउस रे एंड दैट एग्जिबिट द रिचनेस ऑफ द नृत्य ज्ञान एंड वाद्य ट्रेडिशन ऑफ इंडिया मन रखंतो एंड द शिल्प gallery has handicrafts of all Indian states while the people's wall showcase folk and people's wall कौन रहबो ना folk and tribal traditions and painting made by 75 female grassroots artists को द्वारा जतले तैयारी कराई छी सेगुडी को सब स्थान दिया दिबो राइट आई होप आपण माने समस्त एन्जॉय करतबे निहाती भाबरे मते फीडबैक आपण कर दियंतु यस निहाती भाबरे निजरो फीडबैक मते दियंतु ओके ओके चलंतु आमे देखिबा नेक्स्ट करंट अफेयर सो मो बस टू कनेक्ट ब्लॉक हेडक्वार्टर विथ पंचायत इन ओडिशा आपण माने जानि थिबे आस्का एगला गंजाम साइड एरिया एगला झारसुगुड़ा एगला राउरकेला रे एबे ये चलिबो मो बस ओके मो बस रो सुविधा जो माने भी कैपिटल सिटी रे थिबे निहाती भाबरे तार सुविधा जानि थिबे ओके काहे कि मो बस इंपोर्टेंट आज आम जाना पूर्व थर मो क्लास रे मो बस रिगार्डिंग मु क्लियर करी मो बस अवार्ड पाइला ओके यूएन तरफ रु एवं ता छड़ा आज भी किसी इंपोर्टेंस अच्छी देखो जमती लिखाई एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो आमर अच्छा किए मत निहाती भाव इनफॉर्म करूँ सो मो बस टू कनेक्ट ब्लॉक हेडक्वार्टर विथ पंचायत इन ओडिशा वाई न्यूज द स्टेट गवर्नमेंट will soon introduce the mo bus service in rural areas to connect basically focus रही जोटा जो कनेक्शंस प्रॉपर वे रे हे पारुनी कम्युनिकेशंस प्रॉपर वे रे हे पारुनी आको टारगेट सेठी रहइबो सो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स एंड विथ द पंचायतास एंड मोर अबाउट इट जदि हमें देखिबा दिस स्कीम्स कम्स अंडर द लोकेशन एक्सेसिबिलिटी मल्टी मॉडल इनिशिएटिव लाकमी okay again I am repeating
This scheme comes under the Location Accessible Multimodal Initiative LACMI, जार ओडिशा बजेट रे यार नाम मेंशन थिला LACMI ऊपर केते टंका इन्वेस्ट कराइछि. Okay, so LACMI was one of the 20 new initiative with cumulative, yes, Tukuni Sao, very good. Okay, with cumulative outlay of 7,202 crores announced by the state government in 2023-24 budget. A provision of 100 crore has been made for the initiative, and this service will be initial time re kon karabo na initially introduced in the remote regions have no or less public transport, जोटी कि जमारो भी थिबनी किबा बहुत अल्प थिबो. Exactly, Puspanjali, Anil, and Santosh, आपनकर answer correct अछि. टुकुनी साहु अछंती. And the service will be initially introduced in the remote regions having no or less public transport connectivity and gradually be extended to all regions. याको पुणी थरे फर्दर बढ़ा हबो. In first phase, आमे जे देखिबा first phase रे कोटी कोटी को निया जबो. In first phase, the Mo bus service will be made available in 6 districts. So कोरापुट से भितर जाउची, नवरंगपुर जाउची, रायगड़ा जाउची, मलकानगिरी, कलाहांडी एंड गजपति. लेटर इट विल बी एक्सटेंडेड टू द अदर डिस्ट्रिक्ट. परवर्ती अवस्था ता कोन कजो बाकी सब एरिया को मध्य ताको कवर करा जिवो. एंती करके धीरे धीरे पूरा ओडिशा सारा मो बस चलीबार एबे प्रावधान देखायछि. आपण माने निहाती जोठु एरिया रो बिलोंग करछन्ती, खास करी कोरापुट, नवरंगपुर, रायगड़ा, मलकानगिरी, कलाहांडी, गजपति जो मैंने बिलोंग करछन्ती मते निहाती भाबरे हैंड रेस करके मते शो करिबि कि आपण माने एरिया रो बिलोंग करछन्ती. एंड खास करी राउरकेला, झारसुगुड़ा ए रीजन रो भी जो मैंने बिलोंग करछन्ती, आस्का, ओके, गंजाम ए एरिया रो भी जो मैंने बिलोंग करछन्ती, निहाती भाबरे आपण मो बस रो सुविधा पाउछन्ती कि नाही बा ए विषय जानिछन्ती कि नाही आपण माने निहाती मते हैंड रेस करिवे. एवं ता छडा जो मैंने ए एरिया रो बिलोंग करू नाहंती आपण मानको पई या परवर्ती स्टेज रे ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट मो बस रो प्रावधान रखिछन्ती. राइट, निहाती भाबरे मते हैंड रेस करके कहंतु, इन्फॉर्म करंतु. ओके, सो मो बस जानिबा आ किछि डिटेल रे. सो मो बस, the bus service of Odisha capital region under urban transport. Okay, क्रूट आपण माने देखिथे बस रो जो माने भी मो बस यूज करथबे निहाती भाबरे बैक साइड आपण CRUT रो लोगो देखिथे क्रूट रो. So CRUT full form Capital Region Urban Transport Authority has been recognized by the United Nations as one of 10 global recipient of Annual Public Service Award. जो 2022 रे Annual Public Service Award मिलितला मो बस मध्य से भितरे. ओके, सी मध्य अवार्ड पाइतला UN रो. सो द बस सर्विस सर आमे पाइबु. ओके, निहाती भाबरे पाइबे ई फेज सरला परे आपण नेक्स्ट फेज रे पाइबे. The bus service was awarded for its role in promoting gender responsive public service to achieve the SDG Sustainable Development Goal. Mo bus service was launched in November 2018. 2018 November याकू लॉन्च करायतला to transform the urban public transport sector through the use of smart technology. Okay, ठीक अछि. So CRTC नुहे क्रूट. ओके, CRUT ना कोटा पचारछंती. यस, मते क्लियर करंतु. So aim कोन रहिछि to ensure transformation of urban public transport scenario in the city and its hinterland जो आखपाख एरिया रहिछि through use of smart technology, service benchmarking and customer satisfactions. It provides an integrated, reliable and inclusive bus service system. The bus has service like yes, written behind the bus रो पछपटे निहाती भाबरे लिखा हैतै. ओके, तार कोन रहिछि सिग्निफिकेंस बस सर्विस लाइक लाइव ट्रैकिंग एथरे ही परिबो. जीपीएस रो सुविधा अछि. ट्रैवल प्लानर, ऑन बोर्ड वाईफाई, डिजिटल अनाउंसमेंट जोटा कि बारंबार आपण कान जो मैंने भी कैपिटल सिटी रू बिलोंग करथबे बा मो बस रे यात्रा करथबे आपण माने प्रति छकरे प्रति स्क्वायर रे आपण ए साउंड सुनुथबे. डिजिटल अनाउंसमेंट, सर्वेलेंस कैमेरा, निहाती भाबरे सेठी सर्वेलेंस कैमेरा लागि जोथिरे कि मो बस रे बहुत टाइम रे चोरी हेई जाय निहाती भाबरे सीसीटीवी फुटेज देखि कि ही चोरर संधान मिलता. इलेक्ट्रॉनिक टिकेटिंग रो व्यवस्था मध्य रहिछि. सो एबे जिबा नेक्स्ट. Odisha to release a millet
लैंडस्केप सेव्ड बाय ट्राइबल्स ओके बेसिकली जोटा एग्रीकल्चर जो फॉर्मेटा माने रियल उपाय रे जोटा होता है ओके आमे कहि परिबा कि पूर्ण पद्धति रे जोटा होता है तो से होची लैंडस्केप ओके सो देखिबा आउ किछि या ऊपर डिटेल व्हाई न्यूज़ Okay, so agriculture and farmers empowerment department has developed an standard operating procedure SOP for recognitions, evaluations, and release of traditional varieties of millets through seed systems of for landscape under the Odisha Millet Mission by OMM. OMM. Yes. So OMM, विषय आउ किछि जानिबा more about it रे. So the system was developed in the consultations with the ICAR and OUAT, technical expert, field NGO partners, and tribal farmers who are the custodian of the local varieties. सर आपण ओडिशा फायरमैन पाई पढ़ेबे कि ओडिशा फायरमैन नहीं यस ए जो दृष्टिकोण मैगजीन ये आपणकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पाई ही ओके एक्सक्लूसिवली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पाई ही जहाँ भी इंपोर्टेंट ओडिशा रो करंट अफेयर रे जोटा कि एग्जामिनेशन आसीबार चांसेस रहउची सेईटा ही केवल ए दृष्टिकोण रे कवर पाइबे ओके केवल मात्र सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पाई राइट किंतु आपण माने एथु बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं पारिबे यूज मध्य करि पारिबे यस रिप्लाई करूची आपण ओडिशा फायरमैन पाई ये फायरमैन पाई नुहे स्पेसिफिकली तो ये बेसिकली आपण को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पाई ओएस एग्जामिनेशंस पाई ये बेसिकली आपण को हेल्प करिवो ता छडा कोनोसी एग्जामिनेशन में बहुत ही कम हेल्प करिवो आपण जानि छथि कि बहुत सारा एमिति भी टॉपिक अछि बहुत सारा एमिति भी नेम अछि ओके एमती सारा करंट अफेयर्स अछि जोटा कि आपण को पढिबा दरकार जदि आपण माने बाकी एग्जामिनेशन दउछंती किंतु जेतेबेला आपण सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दउछंती ये बहुत ही लिमिटेड हे जाय आपनकर कलेक्शन लिमिटेड हे जाय आपनकर पढिबार तरीका वे लिमिटेड हे जाय जो सिलेक्शंस रही करंट अफेयर खास कर कहि परिबी ये भी मधे लिमिटेड हे जाय लिमिटेड लाइन ऊपर ही आपण सिलेक्शन करि परिबे तो ये बेसिकली बाकी जो एग्जामिनेशन पे एतका हेल्पफुल हबो नाही किबा 50% मु कहबी कि 50% आपन को हेल्पफुल हबो बिकॉज बहुत सारा टॉपिक अच्छी बहुत सारा करंट अफेयर अच्छी जोटा कि बाकी एग्जाम्स रे आसे जोटा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आसे नहीं तो जो गुड़ाक सोशियो इकोनॉमिक ड्रिवन कॉन्सेप्ट गुड़ाक से गुड़ाक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आसे एंड सेही टॉपिक ही करंट अफेयर हिसाब रे मुठी कवर करछि ओके सो इन एडिशन टू स्टैंडर्ड साइंटिफिक पैरामीटर्स सच एज yield climatic resilience pest tolerance cultural preference taste so were also considered during the development of guidelines. As part of this process, 163 millet landscape has been identified of which 14 have shown good potential. So 63 millet amaro rahichi varieties. So millets such as कुंद्रावती लक्ष्मीपुर कलिया माल्यवंत मामी okay गुप्तेश्वर भारती are being considered for release under the seed system for landscapes याकू पूर्ण पद्धति रे याकू जेमति हमर जैविक पद्धति रे याकू उत्पादन करा होची एवं जानिथिबे मिलेट्स रे डिफरेंस कोन रहिची ओके सीरियल्स और मिलेट्स मध्ये डिफरेंस कोन मु बारंबार मोर प्रीवियस वीडियो रे मध्ये डिस्कस कर साची दृष्टिकोण मैगजीन रे आपण देखि परिबे एवं वीडियोस रे मध्ये देखि परिबे जदि आपण देखि नांती प्रीवियस वीडियो गुडी को निहाती भाबे देखिबे मिलेट्स रो डिटेल हम डिस्कस करछु so odisha about odisha millet missions to improve nutritional security and promote sustainable agricultural practice okay odisha millet mission आसला तो देखंतु को जगह रे हमर मिलेट रो उत्पादन होची बेसिकली ए जगह रे ओडिसा रो ए पार्ट रे मिलेट रो उत्पादन होची ओके जस्ट अ मिनिट यस यू कैन सी एठी हमरो दृष्टिकोण आपणकर खाली करंट अफेयर रे दैट टू ओडिशा करंट अफेयर पई आपण जदी देखुचंती आपण जदी पाइबे डिटेल रे एकेडमी आईएएस जो चैनल आपण एबे देखुचंती सेठी सर्च करी कि देखि नेबे जेते सब वीडियो कंपाइलेशंस अछि सेटा खाली केवल मात्र डेडिकेटेड टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस राइट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पई एंड ए जो दृष्टिकोण इनिशिएटिव बा ए जो दृष्टिकोण मैगजीन बा क्लास आज आपण अटेंड करचंती ए दृष्टिकोण होची स्पेशली ओडिशा करंट अफेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इनिशिएटिव
ओके एथिरे केवल मात्र आपनको ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नो कंटेंट ही मिलिबो राइट सो देखिबा को जगह कोस्टल एरिया रे हमर एतटा हुए नहीं आपण माने देखि परछंती एई जो पर्टिकुलर प्लेस रे ही हमर हुए मिलेट्स राइट सो ओएमएम आल्सो सेल्स मिलेट प्रोडक्ट्स सच एज कुकीज देन आपण निहाती भाबे डेली लाइफ रे यूज करतले वर्मिसेलिस एटसेट्रा सो मिलेट शक्ति एंड अबाउट मिलेट्स सो मिलेट्स आर hardy resilient crops that have a low carbon and water footprints can withstand high temperatures and grow on poor soil. Poor soil मध्ये ये millets असे. So India is fifth largest export of millets in the world and produce 21 metric ton of millet annually. So types of millet, Pearls millet, also known as bajra, is a popular grain in northwest India and including Rajasthan and Haryana. The fulfilling millets help keep a check on cholesterol and is also recommended for diabetics. And यार जो हेल्थ बेनिफिट रिगार्डिंग मु आपनको प्रीवियस वीडियो रे मध्ये इन्फॉर्म कर देछि से कंटेंट रे आपण देखि मध्ये पारिबे so finger millets also known as ragi has multiple micronutrients and micronutrients such as vitamin B3 folate and calcium. Bucket wheat millet, also known as kuttu, a popular grain during Navratri. Kuttu is known to help manage blood pressure and aid weight loss too. And uh, barnyard millet, also known as sawa. Okay, suwa jahaku ame kahithau suwa ओडिसा रे सो इट इज ए ग्लूटेन फ्री सोर्स ग्लूटेन द्वारा प्राय समस्त को इन्फेक्शंस बा इचिंग आदि प्रॉब्लम हुए आपण माने जानथिबे इरिटेशंस आदि हुए सो इज अ ग्लूटेन फ्री सोर्स of both insoluble and soluble fibers. Then foxtail millet, also known as uh, Kangi. Okay, Kangi is a grain well known for promoting good cardiac health and maintaining good hair and skin. Then Kodo millet is rich in fiber and iron and help prevent constipation and control blood sugar. ये होची total authenticate data from government site आपण माने पाई परिबे एवं ता छडा देखंतु एटी आउ कोन इन्फॉर्मेशंस ना ओडिशा became the first state to declare India direct incentive to the farmer for the 3 years through DBT. Odisha kon achieve करछि आज पर्यंत. Odisha became first state to develop standard specification for the minor millet machineries through recognized panel of experts from different scientific institutions. First is to include the ragi laddu, okay, and taku distribution madhya karayetla. Okay, जो मैक्सिमम माने वाटर मिले जो फुटप्रिंट जमी कार्बन फुटप्रिंट अच्छी को जगार कार्बन उत्पन्न हुए सो फुटप्रिंट माने मैक्सिमम जिनस मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम एलिमेंट सेठू मिलुथबो सेठू फुटप्रिंट बा पाद चिन्ह हम कोड देखिया पे मिलो पाद चिन्ह रे कार्बन फुटप्रिंट रे हम जेमति कहितबो कार्बन फुटप्रिंट को जगार कार्बन एमिट हुए सेमति वाटर फुटप्रिंट माने को जगार वाटर एमिट हुए तो मिलेट रे भी वाटर मिले ओके जोटा इंक्लूडिंग थाई कम वाटर मध्ये हिता एठी कार्बन फुटप्रिंट ओके बा सॉरी वाटर फुटप्रिंट रो भी आकार मध्ये हमको ये जाना जाए राइट सो द ओडिशा became the first state in the country to complete a benchmarking of the price of little millet and foxtail millet. Odisha received award for the best government initiative on millet promotion by MOFPI IIFPT या विषय अधिक मु डिस्कस करछि प्रीवियस वीडियोज रे आपण माने प्रीवियस वीडियो देखि जानि परिबे सो थर्ड स्टेट to distribute millets in PDS in the country. PDS माध्यम रे मध्ये ओडिशा मिलेट डिस्ट्रीब्यूट करछि या छडा Odisha Millet Mission has received recognition from many quarters. को जगारु so the government of India has asked all states to adopt millet, Odisha's millets. Okay, mission model for the promotions of millets, pulses and oilseeds. The state planning commissions of Chhattisgarh has asked the government of Chhattisgarh to start a millet mission on the lines of Odisha millet missions. The government of India has set up a task force to understand the framework of the Odisha millet missions, okay, and revise the national submission on the millet-based
learning of OMM. Cambridge University is partnered with Odisha Millet Missions to explore possibilities of design of OMM as alternative green revolution framework. The governor of Maharashtra sorry, has asked government of Maharashtra to explore initiating a project on millet, considering the Odisha millet mission. So, and UNIFAD and UNFAO, okay, have supported the framework of Odisha millet mission as suitable for taking up agroecological initiative. So, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस या सहित जोड़िया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି एब्रॉड ରୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମିନେସନ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ मेंस एंड प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू देन जीवा आमे परवर्ती करंट अफेयर को गांधी जी स्टैच्यू अनवील्ड एट धुमाथ इन केन्द्रापड़ा तो मत निहाती भाव कमेंट सेक्शन में मेंशन करंतु को माने ए एरिया रू बिलोंग करछंती आजिर वीडियो जो माने देखुछंती को माने धुमाथ इन केन्द्रापड़ा रू बिलोंग करछंती किबा सी आखो पाखरु के को माने बिलोंग करछंती ओके चालू देखिबा व्हाई न्यूज़ काहे के न्यूज़ रे थिला so that a statue of Mahatma Gandhi was on Thursday unveiled at Dhumat village where the father of nation had started during his historic Padayatra in Kendrapada district in 1934 1934 से जतले सॉरी गांधी जी आसीथिले ओडिशा को तांकर पदयात्रा रे एई एरिया देखि जाइथिले ऑन द ओकेजन ऑफ 89th anniversary of Gandhiji visit to Dhumat. More about it. So the father of nation had halted at Dhumat Rohitle village on May 30, 1934 during his Padayatra. He spent 5 days in Kendrapada and toured different places in the district and Gandhiji also bathed while sitting on the stone in Dhumat village. It is a snana madhya karthile and a pedestal and busts of Gandhiji and freedom fighter Gopabandhu Das have been built around the bathing stone. After that, I janiba au kichi detail re just yes. He also allowed Dalit, say Dalit manunku madhya allow karthile to enter temple in some village during his long walk in 1934. Okay. Right? Then father of nation केते थोर ओडिशा आस्थिले हमकु सेटा जानिबा निहाती भाबा दरकार so father of nation Mahatma Gandhi had set foot in Odisha for first time on 23rd March 1921 which happened to be a day of Dolo Purnima आपण मन रखिया दरकार को दिन थिला से थिला दोल पूर्णिमार दिन and he visited Odisha 8 times between से 8 थर ओडिशा विजिट करते 1921 रु नहीं 46 पर्यंत से 8 थर ओडिशा विजिट करते राइट 8 थर को थर आम जानी रखा दरकार तो फर्स्ट विजिट जो थिला तांकर मार्च 23rd 29 रे 1921 रे सो गांधी अराइव्ड इन कटक ऑन मार्च 23rd he conducted his first meeting at the Kadami Rasool in Cuttack. कोठी से विजिट करते कोठी फर्स्ट मीटिंग करते कदमी रसूल एग्जामिनेशन पड़े in Cuttack on March 24 to propagate his ideas on the non-cooperation movement. He also addressed women at Binod Vihari in the city and later a huge crowd on the riverbed of Kathojodi in the evening. On 25th, Gandhi addressed the meeting at the Gandhi Padya in Bhadrak. He then visited the Satyavadi Vanavidyalaya of Pandit Gopabandhu Das before leaving for Puri, where he addressed a public meeting on freedom struggle on March 27. On March 29, he visited Barampur with Pandit Gopabandhu and addressed a huge gathering at the Barampur stadium. ସେତେବେଳକା जो बरहमपुर स्टाडियम था सिटी ह्यूज गैदरिंग होता सेकेंड विजिट सी केबे आसले अगस्त 19 रु 20 पर्यंत 1925 रे आसले 1925 रे आसले राइट सो गांधी विजिटेड उत्कल टैनरी
a factory producing shoes and other leather products established by Madhusudan Das in Cuttack. He also visited other places of Cuttack before leaving for Kolkata on August 20 evening. Yes. Then third visit केबे हेतला 4 ରୁ 21 1927 रे हेतला डिसेंबर 4 ରୁ 21 पर्यंत. Gandhi visited Odisha to promote khadi. He went to several khadi production centers at different places, including Barampur. He also met people of flood affected areas in Bhadrak district. Okay, and due to sorry, yes, and due to extensive tour, he fell ill and stayed indoors. He attended a public meeting at Cuttack on December 20 and left the city next day. Fourth visit केबे हितला December 22, 1928 रे. During this one-day visit, Gandhi alighted at Jharsuguda while going to Kolkata to attend a Congress session. He addressed a meeting there before traveling to the Sambalpur in a meeting on riverside of Mahanadi. In Sambalpur, people appraised him about various issues faced by them. Then fifth visit के बेतला May 5, okay, May 16, 1934. This visit was important because Gandhi conducted a Padayatra for welfare of Dalit. On May 5, Gandhi addressed people in Jharsuguda and Sambalpur and appealed to people to eradicate untouchability. Untouchability. Okay, so next day he went to Anugul by car and addressed people there. He reached Puri on May 7. On May 8, he unveiled the statue of Pandit Gopabandhu in Puri and started a Padayatra from Puri to Cuttack. He stayed at several places like Kadu Ashram, okay, Satyabhamapur, Balianta. While attending the Padayatra, he left for Patna on May 16. Then sixth visit ହେଇଥିଲା May 21 ରୁ June 7 ରେ 1934. Gandhi resumed his Harijan Padayatra on May 21 from Bairi in Jajpur and district to Bhadrak. Okay, ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା. He covered rural areas of Cuttack, Kendrapara, Bari, okay, Kabirpur in Jajpur and Bhadrak district. It continued till June 7. Seventh visit केबे ହେଇଥିଲା March 25 ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1938 ରେ ଆସିଥିଲେ. Gandhi attend a weekly and an agro and village enterprise exhibitions at Beraboi in Delango area Puriro. Okay, Beraboi, and renowned the freedom fighters like Sardar Vallabhbhai Patel and Rajendra Prasad attend the expo. देन आठतम भिजिट बा आठथर जो भिजिट आसते सभा लास्ट भिजिट होची January 20, 1946 रे गांधी आसते. गांधी met his supporters at Baleswar, Bhadrak, Cuttack, Barampur while going towards Chennai. जेतरा चेन्नई को से जाउतले by train on January 20 and 1946. Huge turnouts had been reported at the station. बहुत सारा भिड़ स्टेशन को आसी जाइथिला. तो ये थिला गांधीकर 8टा भिजिट एवं आपण माने मते कहंतु एई जो 8टा भिजिट रो जो एते भलो गोटे प्रेजेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन से जो कंटेंट आपण माने कोठी भी पाइ नथिबे निहाती भाबरे याकू नोट डाउन करिवे. ये आपनकर मेंस आंसर राइटिंग रे ओडिशा फ्रीडम स्ट्रगल ले गांधीकर कंट्रीब्यूशंस गांधीकर पिक्चर्स ड्रॉ द पिक्चर्स इन ओडिशा हिस्ट्री ओडिशा मॉडर्न इंडिया ओडिशा फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, draw the picture of Gandhi in Odisha freedom struggle. जदि एई टाइप रो क्वेश्चन आसे आपण माने निहाती भाबरे टॉपिक को मेंशन करिवे. जेते सब कंटेंट मु एठी देछि निहाती भाबरे मेंशन करिवे. ओके, एंड एतरे डिटेल रे सब किछि लिखा अछि कि को आश्रम को हो ऑर्गेनाइजेशंस को केबे जाइतिले को काम पय आस्तिले कोठु को डायरेक्शन पर्यंत जाइतिले. ओके, एंड 8टा विजिट की कंप्लीट आपन को इंफॉर्मेशन मु प्रोवाइड करछि. राइट, सो निहाती भाबरे केमिति लागिला इन्फॉर्मेशन आपण माने मते शेयर करंतु. आमे बढ़िबा आगु को. देन आमे देखिबा नेक्स्ट कोन अछि हमर स्पेशल एडिशंस स्पेशल जो रहिछि. ओके, आपनकर एई थरो स्टार्ट हेछि ट्राइब्स ऑफ ओडिशा रु.
एइथिरे आमे आज प्लेस देइछु काहाकू भल भाବରେ देखंतु सो एइथिरे आमे आज प्लेस देइछु द मोस्ट फेमस डंगरिया कंद ओके पीवीटीजी ग्रुप अंडर आसुथबा डंगरिया कंद आपण माने भल भाବରେ देखंतु डंगरिया कंद को ऊपर लाइफ रे आपनकर तांको लाइफ रे केमती कोन चालची तांकर उत्पत्ति कोठु हला तांकर डिटेल न्यूज एठी आज आपण सुनिबे ओके सो डंगरिया कंद एबे आपण माने देखंतु डंगरिया कंद फर्स्ट पॉइंट डंगरिया कंद पीपल आर मेंबर ऑफ Kandho tribes okay and they are located in the Niyamgiri hills maximum time आपण regional disparities रे कंधो ट्राइब रो पीपल मानन को पाइबे तांकर डेवलपमेंट रिगार्डिंग निहाती भाबरे क्वेश्चन आसे मेंस रे तो भलो भाबरे जानि रखंतु हमर जो जते भी ट्राइबल ग्रुप्स जो रही ओडिसा रे दे आर लोकेटेड इन द नियमगिरी हिल्स इन द स्टेट ऑफ ओडिशा नियमगिरी इज द हिल रेंज स्प्रेड ओवर 250 स्क्वायर किलोमीटर व्हिच फॉल अंडर द रायगड़ा एंड कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट कोठी कोठी मेंशन अछि रायगड़ा एंड कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रे इन साउथ वेस्ट ओडिशा its highest point is mountain is known as Niyamgiri or Niyam Dongar. मन रखंतु नियमगिरी और नियम डोंगार जो हाईएस्ट पॉइंट को कहा जाए जो पीक एरिया को कहा जाए एट ए हाइट ऑफ 1306 मीटर राइट द डोंगरिया कंद डिराइव देयर नेम कोठु आसी तांको नेम आसी डोंगार रु आसी से जो पीक एरिया आपन को कहली सो डोंगार मीनिंग एग्रीकल्चरल लैंड ऑन हिल स्लोप से माने कोन करथले मूल व्यवसायी तांकर कोन थला एग्रीकल्चर थला से माने रहउतले कोठी हिल टॉप रे रहउतले डंगर नियम डंगर सेठु आसीची कोन ट्राइब पीपल प्लस डंगर मिसी की डंगरिया कंद बुझी पारले एबे डंगरिया कंद कोठु नामटी आसीची सो डंगरिया कंद derived their name from donger or meaning the agricultural land on hill slope and the name of themselves is झरनिया से माने निजो को झरनिया कहउतले सिथिरे रहिबा टाइम रे कॉज झरनिया माने होची प्रोटेक्टर ऑफ स्ट्रीम्स बा झरणा ओके प्रोटेक्टर ऑफ स्ट्रीम्स बा झरणा सो द पीपल ऑफ नियमगिरी हिल यूज कोई लैंग्वेज अपन को जदी माने थिबो कोई लैंग्वेज रिगार्डिंग मु इंफॉर्मेशन अपन को शेयर करथि ओडिसा करंट अफेयर रे कोई लैंग्वेज रो स्क्रिप्ट रिगार्डिंग कॉज तार स्क्रिप्ट किछि नाही सो कोई लैंग्वेज इज नॉट रिटन but it is spoken among the people of Kand community जदि हमें देखिबा कंद ट्राइब हमकु कोठी कोठी देखिया पे मिलबे भलो भाबरे देखंतु एई एरिया रे 5 नंबर एरिया कोठी अछि रायगड़ा कलाहांडी रे रायगड़ा 59 डंगरिया कंद एंड कुटिया कंद ट्राइब आपनको 58 एंड 59 सो कुटिया कंद एंड लांजिया सोरा ए एरिया रे आपनको देखिया पे मिलबो रायगड़ा एंड कलाहांडी रीजन्स रे डंगरिया कंद सो डंगरिया कंद वर्शिप्ड नियमगिरी हिल्स एज नियम राजा से माने कोन कहि की पूजा करंती ताकू नियम राजा नियमगिरी हिल्स द सुप्रीम कोड ऑफ द नियमगिरी जंगल जो नियमगिरी हिल्स रही तार हेड किए बा तार सुप्रीम कोड किए नियमगिरी राजा और नियम राजा ताकू कहा जाए so the believed that niyam raja is source of their essential resources जहाँ भी तांकू प्रकृति रू मिलुची तारो सोर्स किए नियम राजा and this system of classification of clans within the Dongariya Kand community is process of clan divisions याकर जो clan division प्रक्रिया रही yes NCERT added Kui and Desia language एटा ही एक्जाक्टली मोर प्रीवियस वीडियो रे मु कवर करची ओडिसा करंट अफेयर खास कर दृष्टिकोण रे आपण माने जो माने देखि नांती प्रीवियस वीडियो मोर जाई कि एबे चेक करिवे आफ्टर द क्लास किंबा परे मध्ये चेक करि पारिबे सेरे मु डिटेल मैनर रे मेंशन करची ओके सो प्रोसेस ऑफ क्लान डिवीजन यार सिमिलरिटीज रहिछि नेटिव अमेरिकन को सहित सोसाइटी पर देयर वाज ए प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्स्ड क्लान डिस्ट्रीब्यूशंस थ्रू आउट द लैंड रे बहुत सारा डिस्पर्स्ड है कि प्लान डिस्ट्रीब्यूशन हेची स्टाइल एंड कस्टम तांगर केमति रही कौन से माने पिंधंती द बॉय ऑफ द ट्राइब वेयर टू नोज रिंग पुओ पिला माने कोन करंती दीटा नाकपुडा बा आपण नॉर्मली नाकपुडा कहंती ओके नोज रिंग सो while the women who are member of the tribe wear 3 rings this side रे and middle part रे 3 rings of their nose and a lot of rings on their ears कानरे बहुत सारा रिंग्स थिबो ये होची डंगरिया कंदकर जो निशानी ओके हमें कहि परिबा परिचय
पुओ पिला माने दीटा रिंग्स पिंधिबे नाकरे एवं झियो पिला माने से माने कोन करबे तीनटा पिंधिबे लेफ्ट राइट एंड मिडिल ओके नोज रे एवं ता छोड़ा अपार्ट फ्रॉम दैट कान रे मध्ये बहुत सारा रिंग्स थिबो एंड द गर्ल्स ऑफ दिस ट्राइब वर also wear bracelets, hair clips, necklace around their necks, and overall Dongoria has unique hairstyles, pieces of jewelry, tattoos. The structure of Dongoria Khan family depends on the person's surname, as exogamy is practiced in these societies, and which according to some people is a very common sexual practice among the community in their culture. These exogamous surnames have led to the emergence of prominent surnames resulting from the marriage processes and long-term reproductions. Okay, Dongoria Kand movement या पूर्वरु जीवा पूर्वरु आमे टिके देखि नेबा तांकर गेटअप स्टाइल एठु आपण माने आकलन करि परिबे तांकर केमति देखंतु जियो पिला माने बहुत सारा हेयर क्लिप्स ज्वेलरी नेकलेस एंड ब्रेसलेट मध्ये पिंदि ता छडा आपण को तीनटा नॉस्ट्रिल्स रे आपण दी साइड रे एवं मिडिल पार्ट रे आपण माने देखि परिबे एथिरे आपणकर yes exactly NCRE added all those language in their syllabus and granted exactly एठी आपण पिक्चर देखि पाउछंती तांकर नॉस्ट्रिल्स रे समाने एई टाइप रो नाकफुली बा आमे कहितो नाकफुडा करिथांती जोत्री कि नाकफुली बा जो रिंग से माने पिनथांती ओके राइट आपण माने पिक्चर देखि पाउछंती ओके ओके यस मु पिक्चर को आगे बड़ कर दूची आपण माने देखंतु भलो भाबरे yes see this right so बे जिबा हमने टॉपिक ऊपर को आपण माने भलो भाबरे देखंतु yes so Dongoria Kond movement ये केबे टू स्टार्ट हला Dongoria Kond movement so ये स्टार्ट हिची देखंतु द Dongoria are protesting the Vedanta company Vedanta, okay, locally and are gaining support nationally and internationally. The reason behind Dangoria Kand movement is that for the past 10 years, FTSE, Financial Times and Modern Stock Exchange, 100 companies, Vedanta has threatened to evict the Dongoria Kand tribe and destroy the barren areas of the Niyamgiri Hills in order to remove bauxite from under the hills. And ସେମାନେ ତାକୁ allow କରୁନାହାନ୍ତି ନିୟମ ରାଜା ତାଙ୍କର ରାଗିଯିବେ that's why and Vedanta plan to build a mine that would not only violate the earth but also the rights of the people who should be there. It can have a devastating effect on environment, the people and the values of international community. ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି protest ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ରାଇଟ୍ ଓକେ सो देखिए तांकर हेल्थ स्ट्रक्चर केमती भाबरे खराब होची देखंतु से जो वेदांत एल्युमिनिया जो रहिची सो कंध विलेजर्स blame pollutions from the refinery for the skin problems livestock diseases crop damage red mud city देखा होची a toxic slurry that is refinery's main waste product dries to a fine dust into the sun and government pollutions inspectors have described the groundwater contaminations caused by the alarming and continuous seepage of red mud. The toxic waste was also leaked into the Bansodhara river. Okay, आपण मानकर मने थिबो जेतले मु ओडिसा रिवर सिस्टम कवर करतली बंशधारा कथा निहाती भाबरे मेंशन करतली राइट एबे देखंतु ता भितरे आउ किछि डिटेल्स यस जिबा आउ टिके डिटेल को सो इशू कोन रहिछि पीवीटीजी ग्रुप ये जेहेतु पीवीटीजी ग्रुप अंडर को आछन देखंतु पर्टिकुलरली vulnerable tribal groups pvtg during fourth 5-year plan okay a subcategory was created with the scheduled tribe to identify the most vulnerable groups which were considered to be at the lowest level of development and consequently on the basis of देवर कमिशंस सो देवर कमिशन को द्वारा पीवीटीजी ग्रुप हेतला एग्जामिनेशन निहाती भाबरे आसीबो आपण निहाती मेंशन करबे देवर कमिशंस रिपोर्ट
A criterion for the identifying the particularly vulnerable tribal group was established as pre-agricultural level of technology, low level in low level of technology, low level of literacy, okay, economic backwardness, a declining or stagnant populations. So PBTG were formerly known as the primitive tribal group. PVTG. Okay, पूर्व तो primitive tribal group का होता. How many particularly vulnerable tribe groups are there? As per census 2011, there are total 75 PPTG out of 705 scheduled tribes spread over 17 states and one union territories. The categorizations of one is done by the Ministry of Home Affairs and not by the Ministry of Tribal Affairs. So make sure जानी रखंतु PBTG group रो category किए decide करंती ट्राइबल अफेयर्स नुहे डाउट रे पड़िबेनी बा कंफ्यूज हेबे नहीं ट्राइबल अफेयर्स नुहंती ओके तो ओके से रिगार्डिंग प्रोटेस्ट चलची वेदांत रिगार्डिंग ओके बारंबार कॉन्फ्लिक्ट होउची जेहेतु सेठी मिनरल्स मध्ये अछि बहुत इफेक्टिव मिनरल्स मध्ये अछि सेतरे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चलची तो ता नै कि प्रोटेस्ट मध्ये चलची ओके so the categorization is done by Ministry of Home Affairs. Home Affairs द्वारा Home Ministry द्वारा याको categorize करा जाए. Odisha has the highest PBTG. Okay, in India, while no PBTG are found, state of Punjab and Haryana रे हमको PBTG देखिया पाई मिलिबनी बा ST populations हमको देखिया पाई मिले नहीं. Right? Apart from that, ओडिशा रे just a minute. Yes, ओडिशा रे को PBTG group देखिया पाई मिले बा हमें नियर फ्यूचर डिस्कस मध्य करिवा बिरहोर बंडो दिदाई डोंगरियाकंद जुआंस खरियार्स कुटियाकंद लांजिया सौरा लोधास बांकड़ियास पाउडी भुइया ओके सौरा चुक्टिया भुइया ओके ए विषय रे मध्य हमें आगामी अध्याय रे जो नेक्स्ट जते आसीबो हमर दृष्टिकोण सेतरे गोटे गोटे पार्ट रे हमें ताको डिटेल कवर करिवा. So in these sections, some of the issues and challenges faced by PBTG group in country like the death data. The census does not comprehensively capture the data on the PBTGs. Some PBTGs are not even recognized as STs. किसी PBTG को तो ST रा मान्यता ही मिली नहीं. And some PBTGs are located outside Schedule 5 and Schedule 6 area and remain barefoot of special protections, problems of cultural contract with the which causes degradations of the native culture, bringing in foreign pathogens and diseases that can wipe out जेहेतु तांको भितरे इम्यूनिटी पावर एते स्ट्रांग न थाई किबा तांको भितरे एते सारा डिजीजेस मल्टीपल डिजीजेस देखा जायनी जदि सेठी आमे बारंबार इन्फ्लुएंस करूछु ओके बारंबार सेठी आमे समस्त को पठाउ क्षेत्र कोन जदि फॉरेन पैथोजेन्स आसे डिजीजेस आसे ताले एमिति भी चांसेस अछि कि बहुत जण लोक सेतरे मरि जानती सो दैट कैन वाइप आउट देयर एंटायर पॉपुलेशंस सिफिल्स अमंग जारवास जेमति जारवास कर सिफिल्स आसला लोक सब बहुत जण लोक मरि गेइतले जारवास distributions of tribal ways of life due to the economic exploitation of resources of the area or resource courses rivers of exploitative economy systems like goti systems okay rise of the exploitative system a bonded labor system among the juangos bonded labor tanku rakha jaye then the conflict between the environmental conservations and upholding tribal rights, PBTGs being a near Mendelian populations are more prone to modern diseases and thereby increasing chance to exterminations and poor socioeconomic indicators. For example, Himalayan tribes suffer more goiter due to the peculiarity of iodine and their diet in their diet. Okay. Then government scheme कौन रही PBTGs ପାଇଁ? The government has introduced several programs and schemes for the development of PBTGs. Some of them are discussed below like schemes for development of PBTGs on the lines of Banabandhu Kalyan Yojana या फिर Van Bandhu Kalyan Yojana mandates all state to prepare conservation development plans for PBTGs in the state enactment of scheduled tribes and other traditional forest dwellers, recognitions of forest rights, Act 2006, which for the first time recognized the land rights for the tribal
local initiatives by state government like Jan Swasthya Sahayog by Chhattisgarh, restricted area permits in Andaman and Nicobar, formation of micro protect agency by micro project agency by Odisha, right? So yes, that's it. So निहाती भाव में आपण माने मते कहंतु केमिति लागिला आजिरो सेशन जेते जण प्रेजेंट अछंती समस्तंकर लाइक ए वीडियो रे आसीबा दरकार निहाती भाव में मते मेंशन करंतु कि केमिति लागितला आजिरो सेशन सेंड को केते सारा इंफॉर्मेशन आपण मानको मु प्रोवाइड करली निहाती भाव में जदि देखिबा ये हमर प्रीवियस जो कलेक्शन रु किछटा कम हे पारे ए जो मंथ रे मे मंथ रे बट जेतिकी भी थिला बहुत इफेक्टिव थिला ओके एवं निहाती भाव में आपनकर फीडबैक मु आशा रखिबी कमेंट सेक्शन में आपण माने मते निजर फीडबैक देई पारिबे आफ्टर द क्लास जो कॉमन कमेंट सेक्शन अछि सेथिरे मध्ये निजर फीडबैक आपण शेयर करंतु ये तो रहला लाइव चैट रूम एथिरे आपण शेयर करछंती कमेंट सेक्शन में मध्ये आपण माने निहाती शेयर करंतु आउ कोन सब इंक्लूड करा जाई पारे आपनकर हिसाब रे कोन डेवलप करिया पई पड़िबो को सब कंटेंट रो अभाव देखाउची ओडिसा रे खास करी आपण माने मते प्रोवाइड कले से कंटेंट को मध्य मु धीरे धीरे ऐड करबी फॉर योर मेंस एग्जामिनेशंस ओके एंड राइट सो एतिकी ही आजिर सेशन ने आपण मन पई थिला एवं यस सो पुणी थरे एई जो दृष्टिकोण मैगजीन सहित आपण मानक सहित देखाबो नेक्स्ट मंथ रे एवं ता छडा आपण माने कोन करि परिबे सिंपली यार गोटे दिन 2 दिन भितर ये साइट रे अपलोड हे ताकू जे फ्रीली आपण एक्सेस नहीं पारिबे फ्रीली पढ़ी पारिबे डाउनलोड करि पारिबे ओके विथ एमसीक्यूज एवं ray.academy रे आपण वंस एंटर करके साइट विजिट करंतु डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस मध्ये करि पारिबे एवं नेशनल एंड रीजनल माने ओडिसा करंट अफेयर पूरा टोटल बुकलेट आपण को फ्री ऑफ कॉस्ट रे सेटी अवेलेबल हे जिवो ओके निहाती भाबरे याकू शेयर करंतु एवं लाइक निहाती भाबरे करंतु जते जण प्रेजेंट अछंती मैक्सिमम शेयर करंतु निजर ग्रुप्स भितरे निजर इंडियन को भितरे दैट्स इट फॉर टुडे एवं आशा करूची आपण